Hello students, welcome back to the Tantray physics classes. In last lecture I have explained you the set of problems on collisions. Today there is one more set of problems for collisions. And this will be the last lecture on collisions. And rest of the problems objectives are given in my app, which can be downloaded from Google Store, Tantray physics classes. Okay. Now, first problem. This is a body of mass m having velocity v. It hits this body, combines with it, collides with it, and then they strike another body and combines, and finally the whole combined body move together. And these are 100 blocks. They move together. I want to find the velocity of those 100 blocks together. What is the velocity of the combined body? This body hits this body, combines, collides with it, and then this body combines with it, then this body combines with it, and finally the whole combined body moves with it in a forward direction with velocity v prime. Our question is to find v prime of the combined body, So how can we do that? You cannot use a conservation of kinetic energy here because it is an inelastic collision. The collision is not elastic, it is inelastic one. So the only thing that you can use here is conservation of momentum. So what is the initial momentum before it hits any body? That is Pi is equal to mv. What is final momentum after all the bodies combined and move as a single body in the forward direction? That is Pf. That is 100 mv prime. So the only thing that we can apply here is conservation of momentum. Because momentum is conserved. Initial momentum is equal to final momentum. In case of inelastic collision, there is a momentum conservation. In case of elastic collision, again there is a momentum conservation. But kinetic energy is conserved only in elastic collisions, not in during this kind of a collision, which is inelastic. Okay, now use the rule Pi is equal to Pf. Now Pi is mv is equal to 100 mv prime. This will give you, m gets cancelled, v prime is equal to v by 100. That is the answer. Question is done. A body hits this body, again hitting all together, and finally this whole body moves with a single body. We have to find the velocity of a single body that we have found just by using conservation of momentum. Okay, second question. It's a body here. Its mass is m1 and its velocity is 4 meters per second. There is one more body. Chalo iska m small m kar do, capital M. Huge body, capital M. Its velocity is 6 meters per second. Velocity is 6 meters per second. But the question, when this body hits this body, I have to find its final velocity. Final velocity of m. If m is less than capital M, you can neglect the mass of this body as compared to this body. So which formula you are going to use? Obviously the collision is elastic. The collision is elastic. The collision is elastic. If the body hits this body, the huge one, and I have to find the velocity of this body final after the collision. Collision is elastic, that you must know. I have written that collision is elastic. So recall the elastic collision equations. Final velocity of the first body and final velocity of the second body after the collision. If you have watched all my lectures, in the very first lecture, मैंने v1 और v2 को आपको बताया क्या होता है. From the some equations, conservation of momentum कर दिया, conservation of kinetic energy कर दिया, उससे मैंने equations कुछ हासिल की, तो v1 भी निकाला, v2 भी निकाला. v1 was the
final velocity of the first body, hitting body, and v2 was the final velocity of the second, which was being hit by the first body. दोनों का velocity मैंने निकाला. So what is v1, final velocity of this body after the collision? That is, अगर आपको याद होगा, m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1. I will write that formula. Then I will substitute here what u1 means, what u2 means, plus, what should I write? 2 times m2 by m1 plus m2 into u2. So m2 is huge, so m1 can be neglected. So v1 is equal to, इसको neglect कीजिए, इसको भी neglect कीजिए. So that is m2 by m2 u1 plus यहाँ m1 neglect कीजिए, m2 और ऊपर 2m2 by m2 u2. ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ. v1 is equal to minus u1 plus 2u2. अब substitute कीजिए what is u1 and what is u2 from the given figure. तो वो क्या लिखेंगे आप? v1 is equal to, शाबाश, what is u1? अगर इस डायरेक्शन को आप लेंगे, ओके, x डायरेक्शन, तो what is u1? that is 4i plus 2. what is u2? that is 6i. x direction, I is the x direction. So v1 is equal to minus 4i plus 12i. That's equal to how much? 12 I say 4, that's 8i. Means this will go in the forward direction because the answer is positive with 8 meters per second. Its final velocity will be 8 meters per second in the positive x direction. This is the solution. Please mark it well. हो गया. चलिए, question number third question. Third question. Okay, third one. Suppose there is a body, it falls from certain height, not from certain height, from 1 meter. From 1 meter falls here on the ground, and when the collision takes place, the collision is inelastic. The collision is elastic with the ground. The collision is inelastic with the ground. Coefficient of restitution E is equal to 0.6. let me suppose. इसके साथ जो coefficient of restitution है, तो it rebounds back, it hits and rebounds back. It goes to some height, okay, h2. Suppose this is h1. My question is, to what height this object will rise again? The height h2. To what height it will rise if it hits the ground and loses some kinetic energy? To what height it will rise? Obviously, it will not rise up to the height h1 because it has lost some kinetic energy while colliding. It is an inelastic collision, 60%. That means it will lose some kinetic energy और ये h1 का height achieve करेगा नहीं, थोड़ा सा कम height achieve करेगा, हमें वही निकालना है. अच्छा, अब बताइए, what is this velocity with which it hits the ground, v1? That will be, according to the formula, the gravitational rules, root of 2gh1. Okay, when it hits the ground with velocity v1, it will rebound not with v1 but with v2. Why? Because some of the speed it loses. So v1 and v2 are not the same. अगर ये elastic collision होता तो it will rebound with the same speed as v1. But the collision in inelastic, it will not rebound with the same speed. So it is v2. तो ये v2 किसके बराबर होगा in terms of h2? The formula is the same. When a body falls to a height of h, the velocity is v root of 2gh. अगर यहाँ velocity v होगा तो height will be v square by 2g. Or again the same formula, this v2 will be root of 2h2. So what is v2 with which it rebounds back to achieve the height h2? Again it will be root of
2gh2. Formula is same. Whether the body falls through a height of h1 to achieve this velocity, अगर velocity v2 है, to which height it will achieve h2, तो equation वही है. यहाँ पर v1 is equal to root of 2gh1 लिखा जाएगा, और ये v2 और h2 के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी इसी फॉर्म का रिलेशनशिप है. आप कहेंगे नहीं, what is h2? Okay, tell me what is h2 according to the projectile motion. That will be v2 square by 2g, because theta is 90. यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा था, लेकिन वो थीटा 90 होकर के ये हो जाएगा. तो अगेन इट इज v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh2. तो v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh2. तो अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? 0.6 as is given, but according to formula, velocity of recede, that is v2 minus 0, ground ka velocity. So v2, velocity of approach when it hits the ground, so v1 minus 0, v2 by v1. What is v2 by v1 from here? Root of 2gh2 by 2gh1. This by this. ये खत्म हुआ. तो what is 0.6? That is root of h2 by h1. स्क्वायर करके इसका स्क्वायर होगा तो 0.36 इज इक्वल इसका स्क्वायर h2 by h1. तो व्हाट इज h2? दैट इज 0.36 into h1. तो व्हाट इज h2? to what height it will rise? That is 0.36 into h1 is 1 meter. So it will rise to the height of 0.36. Answer. खत्म हुआ क्वेश्चन. ये अच्छी तरह से देख लीजिए. When it hits the ground, velocity v1. When it rebounds, it rebounds with a different velocity, different speed, and that will not raise it to the height h1 because some of the kinetic energy it has lost. It will go to the height of h2, और वो h2 ऐसे आपको हमने मतलब हासिल किया. क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ वन देखिए. फोर्थ वन, चलो फोर्थ वन. ये है एक ऑब्जेक्ट, इसका मास है m1, इसका वेलोसिटी है ओके v, एंड यू हैव वन मोर ऑब्जेक्ट हियर, m2 मास उसका है और इसका वेलोसिटी 0 है. ठीक. और ये इसको कोलाइड करता है. ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, थोड़ा सा ऑब्लिक कोलिजन है. इज एन ऑब्लिक कोलिजन, इसलिए ऑब्जेक्ट यहां लीजिए m2. जब कोलिजन हो गया तो कोलिजन के बाद क्या हो जाता है? आफ्टर द कोलिजन क्या होता है? ये जो ऑब्जेक्ट है, हिटिंग ऑब्जेक्ट, इट गोज स्ट्रेट अपवर्ड्स विद वेलोसिटी v/2. एंड दिस ऑब्जेक्ट, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये पता नहीं कहां जा रहा है. ओके, लेट मी सपोज इट गोज लाइक दिस m2 एंड इट मेक्स एंगल थीटा विद द x एक्सिस, और ये v डैश का इसका वेलोसिटी है. हमें निकालना है व्हाट इज v प्राइम इन टर्म्स ऑफ दिस v. दिस बॉडी हिट्स दिस बॉडी. आफ्टर द कोलिजन दिस बॉडी गोज अप इन द y डायरेक्शन and this body goes in some other direction with speed v prime. We have to find its v prime speed. So question is, what is v prime? Means direction b और magnitude b. दोनों चीजें इसकी क्या है, तो कैसे किया जाएगा? Okay, so what should we do? Conservation of momentum कर दीजिए. Conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो क्या है इनिशियल मोमेंटम इन दो बॉडीज का? इसका वेलोसिटी पहले ये 0 है. तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? इनिशियल मोमेंटम इज, what should I do? Should I conserve momentum in the x and y direction separately, or should I conserve total momentum in a single equation? What do you want me to do? If I consider x and y momentum, x momentum and y momentum separately, I will get two equations and I will get the answer. If I conserve single momentum in a vector form, I will get the answer. But
If I consider single momentum, total momentum in a single equation, I will get the answer quickly. So I will show you both the methods. Okay, P Ix is equal to P Fx. तो इसका करना पड़ेगा दो कंपोनेंट. इस कंपोनेंट में क्या आएगा, m2 v प्राइम cos थीटा. इस कंपोनेंट में क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट m2 v प्राइम sin थीटा. ये cos कंपोनेंट, sin कंपोनेंट. अच्छा, तो यहां पर Pix, Pfx, initial momentum in the x direction, final momentum in the x direction. Initial momentum in the y direction is equal to final momentum in the y direction. So what is the initial momentum in the x direction? Yes, सारा ये तो x डायरेक्शन में है. m1 v is equal to, यहाँ क्या है x momentum in the final momentum in the x direction, ये तो है. इसके तो दो पीस हो गए, ये और ये, तो एक ही पीस x डायरेक्शन में है. That is m2 v प्राइम cos ऑफ थीटा. तो यहां जरा बताइए मुझे, यहां क्या लिखूं मैं, यहां क्या लिखूं मैं. व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन? इनिशियली इनिशियल मोमेंट जीरो, इसका यहां भी जीरो और यहां भी जीरो. व्हाट इज फाइनल मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन? यहां ये तो मास m1 है इधर, सो इट इज m1 v by 2 माइनस m2 v प्राइम साइन थीटा. अगर ये यहां लिया जाए या ये यहां लिया जाए तो m1 v by 2 इज इक्वल टू m2 v प्राइम साइन थीटा. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करो. अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा m1v डिवाइड बाय m1v by 2, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू इसका m2v प्राइम cos थीटा डिवाइड बाय m2v प्राइम साइन थीटा. तो ये खत्म हो गया, 2 ऊपर आएगा इज इक्वल टू ये खत्म, चलो 1 बाई टेन थीटा, क्योंकि साइन नीचे है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाई 2. ये हो गया, डायरेक्शन निकला. अब आप मुझे बताइए हाउ टू फाइंड द v प्राइम. v प्राइम कैसे फाइंड करेंगे आप? तो थीटा मिला तो cos थीटा भी मिलेगा, तो v प्राइम भी यहां मिल सकता है. तो हाउ टू फाइंड v प्राइम? सो v प्राइम इज इक्वल टू m1v डिवाइड बाय m2 cos थीटा. तो व्हाट इज cos थीटा इक्वल टू? cos थीटा किसके बराबर लिखूं मैं? शाबाश, cos थीटा किसके बराबर लिखा जा सकता है? चलो ये तो मिला, और याद भी रखो ये थीटा इक्वल टेन बाई 2 या टेन थीटा इक्वल 1 बाई 2. चलो cos थीटा निकालता हूं ताकि मुझे v प्राइम मिलता है. v प्राइम मुझे मिलेगा, तो टेन थीटा इज 1 बाई 2, तो व्हाट इज cos थीटा? अच्छा, टेन थीटा अगर 1 बाई 2 है तो मैं ऐसे, ये थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो टेन सा परपेंडिकुलर बेस, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये रूट क्या हुआ 4 + 1 दैट इज 5. इस ट्रायंगल से टेन थीटा 1 बाई 2 परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये रूट 5 हो गया. तो अब cos थीटा यहां से निकाला जा सकता है. v प्राइम इज इक्वल टू m1v डिवाइड बाय m2 cos थीटा, बेस पे है हाइपोटेन्यूज, 2 बाई रूट 5, तो रूट 5 ऊपर चला जाएगा. आंसर खत्म हो गया. अगर मैं एक इक्वेशन से करूं तो कैसे करूंगा मैं? चलो मैं एक इक्वेशन से भी आपको दिखाता हूं कैसे किया जा सकता है. हाउ टू डू इट इन सिंगल इक्वेशन, सिंगल इक्वेशन. चलिए रब करते हैं. तो आपको मोमेंटम पूरा कंजर्व करना है, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व. सो पी आई इज इक्वल टू पी एफ, ये है हमारे पास इक्वेशन. टोटल यहां कंपोनेंट करने की जरूरत है नहीं, फिर कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है. नॉट दिस, नॉट दिस, कोई जरूरत नहीं है कंपोनेंट करने की. चलिए
व्हाट इज पी आई? m1v प्लस 0, ओके, m1v, मगर आई साथ, क्योंकि आई डायरेक्शन में है वो साथ आना चाहिए, प्लस इसका 0 इज इक्वल, व्हाट इज पी एफ? फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम इज m1v/2. जे, क्योंकि जे डायरेक्शन है, प्लस इसका m2 का, दैट इज m2v प्राइम, ऐसे वेक्टर, क्योंकि उसका पता ही नहीं है जे में है कि आई में है, इसलिए ऐसे रखना पड़ेगा. तो अब व्हाट इज इट, इसको यहां ले आइए, m1vi माइनस m1v/2j इज इक्वल टू m2v वेक्टर प्राइम. तो अब यहां से सीधे निकला v प्राइम, v वेक्टर प्राइम इज इक्वल टू v कॉमन डिवाइड बाय दिस m2, अंदर हो जाएगा m1i, ये वाला v कॉमन निकालकर, माइनस m1/2j, खत्म, आंसर. अब आप कहेंगे नहीं नहीं, ये क्या आंसर हुआ, ना आपने मैग्नीट्यूड निकाला ना डायरेक्शन निकाला. मैग्नीट्यूड है तो ऐसे, v मैग्नीट्यूड रूट ऑफ, पहले v/m2 तो ऐसे ही, फिर उसका रूट, इस मैग्नीट्यूड यहां से निकालना है, ये तो है ही है, ये तो पहले ही एम्पलीट्यूड है, m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर बाई 4, वही हुआ 5 m1 स्क्वायर बाई 4, वही हुआ वही जो हमने निकाला. थीटा किसके बराबर, tan इनवर्स व्हाट बाय व्हाट, tan इनवर्स जो x एक्सिस के साथ एंगल बनता है, दैट इज m1/2 j कंपाउंड बाय x कंपाउंड बाय m1, खत्म हो गया. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, आंसर. तो दिस इज अ सिंगल इक्वेशन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेक्टर्स वेरी फुली, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखा, पहले v/m2 तो लिखो, मैग्नीट्यूड यहां से निकालो, ये तो मैग्नीट्यूड है ही है प्रोडक्ट में, फिर मैग्नीट्यूड यहां से निकालना पड़ता है. थीटा निकालने के लिए इसका कोई रोल नहीं है, रोल इसका है, दैट इज tan इनवर्स दिस बाय दिस. और लगे हाथ किस क्वाड्रेंट में है, जिसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव ये वाला, y नेगेटिव, तो हो गया ये क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट में से ऑब्जेक्ट चला जाएगा. तो ये फोर्थ हो गया, जरा कॉपी कीजिए, शाबाश. फोर्थ वन, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ, टू बॉडीज है, इसका वेलोसिटी है v और ये इसका वेलोसिटी है v/2, इसका मास है m और इसका मास है m/2. तो हमें इस बॉडी का निकालना है वेलोसिटी. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी, बॉडी A, बॉडी B? फाइनल वेलोसिटी of body A after the collision. After the collision. What is the collision type? Is it elastic or inelastic collision? Let the collision be elastic first. चलो elastic A, इसके मैं दो केसेस बनाता हूं. A elastic one. इलास्टिक वन में इसका फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होता है, बताइए जरा. v इज इक्वल टू, ओके, v1 इज इक्वल टू, यू रिमेंबर दैट m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस, यस, 2 टाइम्स m2 बाय m1 प्लस m2 u2. ये तो है आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. ठीक, v1 is equal to, what is m1, that is m minus m/2
by m plus m by 2 into what is u1? That's v plus twice what is m2? M by 2. What is m1? That's m plus what is m2? M by 2 into u2, that is minus v by 2. Be careful about here because it is this velocity. Okay, now v1 is equal to, चलिए ऊपर है m by 2 ये करके, नीचे है 3m by 2 into v माइनस, नीचे है, ऊपर है 2m by 2, नीचे है 3m by 2 इंटू v by 2, क्योंकि ये नेगेटिव मैंने यहां लिखा m by 2 कैंसल, यहां m by 2 कैंसल, यहां ये 2 by 2 भी कैंसल होगा, तो v1 इज इक्वल टू ये v by 3 माइनस v by 3 इज इक्वल टू 0. दिस विल कम टू स्टॉप, ये स्टॉप हो जाएगा. दिस वन अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस विल स्टॉप and this will have some velocity in the right direction. Yes, this will stop. Maybe this will all, but we have to find the velocity of this. अगर मैं ये इसका भी velocity निकालूंगा तो वो तो आप निकाल ही लेंगे, v2 का फॉर्मूला लिखकर निकाली velocity, हो सकता है वो भी 0 हो जाए, लेकिन फिलहाल ये तो स्टॉप हो गया ये बॉडी, because v by 3 and again v by 3 it has stopped. Okay, sixth question. Question number 6. Sixth question. Question number 6. This is a body. Its mass is 0.5 kg. It has some velocity. It is one more body. Its mass is 1 kg and it has a velocity of, okay, let me suppose it has 0 velocity, it is 0, and its velocity, let me suppose it is, okay, 2 meter per second. They have an elastic collision. Let them have an elastic collision. Let the two bodies have an elastic collision. So what is the question? Question is, what is the loss of kinetic energy? What is loss of kinetic energy? ये है हमारा क्वेश्चन. इसमें कितना लॉस हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हो जाएगा इफ द कोलिजन इज एब्सोल्युटली इनइलास्टिक, मतलब दे कंबाइन टुगेदर, एक सिंगल बॉडी हो जाता है, आप तो मास हो जाता है 1.5 kg, राइट? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है? सो डू यू नो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन लॉस लेक्चर आई हैव शोन यू एवरीथिंग. याद है आपको? जब आप मेरा वो लेक्चर वॉच करोगे तो वहां मैंने डेल्टा क्यू, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया, आप वो वॉच कर सकते हैं. तो मैं रेफर कर रहा हूं उस लेक्चर को. डेल्टा क्यू अगर आपको याद होगा 1/2 m1 m2 बाय m1 प्लस m2, ऐसे करके इसको मैंने रिड्यूस मास वहां बताया था, u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर स्क्वायर, ये वाला ये फॉर्मूला है. देखिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 1/2, बताइए क्या है m1 0.5, बताइए m2 1, बताइए m1 प्लस m2 0.5 प्लस 1, व्हाट इज u1? ये 0 हो गया, तो ये होगा u1 स्क्वायर. u1 वेक्टर का स्क्वायर होता है u1 स्क्वायर, क्योंकि ये u1 डॉट ये u1 वेक्टर इसका स्क्वायर होता है u1 डॉट u1, वो होता है u1 स्क्वायर. ठीक, अच्छा, तो ये 0 है तो ये होगा u1 स्क्वायर. ये हुआ 1/2, 0.5 डिवाइड बाय 1.5, 1 ऐड करने से ये हुआ u1 स्क्वायर हुआ 4, ये हुआ 2. तो आंसर क्या आएगा?
What will be the answer for the sixth question? Change in kinetic energy is equal to 0.5 को 2 मल्टीप्लाई करो 1 हो गया तो 1.5, ये हुआ 10/15, ये हुआ डेल्टा K इज इक्वल टू 2/3, ये हुआ 0.67 जूल्स। आंसर इतना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो, बस यू हैव टू यूज द फार्मूला जो मैंने आपको पहले ही बताया। इट्स वेरी इजी नाउ। This hits this body, coalesces, combines, and there's a loss of kinetic energy. How much is the loss of kinetic energy that you know? Use the formula. What's the formula? 1/2 m1 m2 by m1 plus m2 u1 minus u2 mod square. Okay? Seventh question. Seventh question. Seventh one. There's a body having some velocity that I will tell you, and it's a wall here, heavy wall, massive. Its mass is m. Its velocity is something, and its velocity also something. Its velocity is 2 meters per second. Its velocity is 5 meters per second in this direction. Okay? It makes an elastic collision with the wall. The body, this is the body. The body or the ball makes elastic collision. Elastic collision with the moving wall, with the moving wall. What is the final velocity of the ball after elastic collision? What is the final velocity of the ball after the collision? सोच लीजिए, जब ये हिट करेगा इस वॉल को, वापस आएगा या आगे जाएगा, आई डोंट नो, बट व्हाट विल बी द फाइनल स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द स्पीड मींस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मींस विल इट कम बैक और विल इट गो फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको हिट करने से आगे ही जाएगा कि वापस ही आएगा, लेकिन वैसे वॉल का वेलोसिटी जो है वो दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी u2। ठीक है, तो कैसे किया जाए बताइए, सोच लीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए इसके बारे में। शाबाश, सोच लिया आपने। बॉल मूव्स, इट हिट्स द वॉल, मे बी इट कम्स बैक, और वापस ही आएगा, लगता भी ऐसा है। मे बी इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स our intuition breaks down, we don't know, maybe it goes forward, but obviously we may understand that it may have more possibility to come back. Okay, what is its final velocity? What is its final velocity? देख लीजिए आप, पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए। V1, final velocity of the first particle, striking particle, from the left side we take it 1. You already know the equation, m1 minus m2 divided by m1 plus m2 u1 plus twice m2 m1 plus m2 u2. That is my equation. Velocity of the first body, this body. Velocity of the second wall, that can also be written. V2 is equal to, that is something like twice m1 u1 by m1 plus m2 plus m2 minus m1 by m1 plus m2 u2, and you must remember these equations. Okay, now what should I do here? Okay, मगर यहां जो है ये m जो है, it is less than capital M. Ball is huge and this ball is very small ball, so this capital M is huge. So V1 is equal to, ये तो बॉल का मास है, ये बॉल का मास है, तो ये नेग्लेक्ट कर लो, बॉल का मास एज कंपेयर टू द वॉल मास, तो इट इज माइनस m2 by m2 u1. What is u1? 2.
प्लस ये स्मॉल है, ये ह्यूज है, दैट इज 2m2 बाय m2 इंटू u2, दैट इज -5। ये देखो उल्टा इसके, अगर इसको पॉजिटिव लिया इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेते पॉजिटिव। सो v1 इज इक्वल टू -2, 5 2 जा 5 into 2, that's -10, it is minus what 12 meters per second। वापस आएगा, come back, it will return because it is negative velocity, it will come back with a -12 meters per second। That is the answer। That is the answer। Okay, 8th question। ये एक body of mass m having velocity okay u, it hits another body of mass m obliquely, and after the hitting what happens, this body, first body, it moves upwards with velocity v by v by 3, and this body I don't know where it moves, where it goes, theta, it is x, it hits this body and this body goes up in the y direction and this body goes in this direction, so we have to find its velocity v prime। So what should we do? The collision is inelastic and its velocity is 0। क्या किया जाए अगर इसका वेलोसिटी ऑफ सपोज 2 लेंगे, 2 मीटर पर सेकेंड सिंगल इक्वेशन से, तो बताइए आप व्हाट इज द मोमेंटम इन द इनिशियल मोमेंटम एंड हियर व्हाट इज द फाइनल मोमेंट। एक ही इक्वेशन में कर लेते हैं। व्हाट इज इनिशियल मोमेंट? PI इज इक्वल टू PF, एक ही इक्वेशन में कर लेते हैं। तो बताइए इनिशियल मोमेंटम क्या है इन दो बॉडीज का टुगेदर, 2m मगर I इज इक्वल टू, बताइए इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, बताइए PF क्या है इस बॉडी और इस बॉडी का मोमेंटम टुगेदर, मगर वेक्टर में लिखना पड़ेगा। सो दैट इज m टाइम्स v बाई 3, ये वाला j प्लस ये वाला m v वेक्टर, m और m कैंसिल हुआ, ये हुआ 2i माइनस v बाई 3 j इज इक्वल टू v प्राइम। लेकिन अगर ये 2 है तो ये 2 बाई 3 है, क्योंकि v को हमने वैल्यू अब दिया, इट इज 2 बाई 3, 2 बाई 3। बताइए v मैग्नीट्यूड क्या है, रूट ऑफ, बताइए 2 स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, 3 बाई 2 का स्क्वायर, 2 बाई 3 का स्क्वायर, यू गो रूट ऑफ 4 प्लस 4 बाई 9, यू गो रूट ऑफ 40 डिवाइड बाई 9, ठीक है ना। सो v प्राइम इज इक्वल टू दिस। हो गया क्वेश्चन खत्म, 8th क्वेश्चन फिनिश्ड। हमने एक ही इक्वेशन में करने की कोशिश की, आप दो इक्वेशन में भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x मोमेंटम कंसिडर करोगे, आप y मोमेंटम, दोनों को कंसिडर करोगे, आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, डिवाइड से काम चलेगा, स्क्वायरिंग एडिंग से भी काम चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूं मैं, x और y, यहां एक बॉडी है एंड विद इन द बॉडी इट splits, there is an explosion of the body, and in the explosion what happens, two fragments, one goes in this direction, other goes in this direction, and third I don't know, third may go in this direction, लेकिन masses क्या है,
इसका मास इज 1:1:3, मतलब जो 1:1 है ये मास जो है, these 3 masses are in the ratio of 1:1:3, मतलब ये अगर ये मास m लिया जाए, ये m लिया जाए तो ये 3m होगा, तो उसी वही कहलाएगा m:3m मीन्स 1:1:3। फिर से मैं बताता हूं, एक बॉडी है किसी, यहां तो मैंने ऑरिजिन में लिया है, ऑरिजिन पर लिया है, लेकिन कहीं भी हो सकता है, एक्सप्लोजन हो गया, अंदर से डेटोनेट हो गया, तो इट बिकम्स फ्रेगमेंट्स, 2 fragments go, one in the x direction, other in the y direction, third I don't know, I have to find the velocity of the third fragment. What is the velocity and direction? What is the velocity of the third fragment? Third fragment. What is the velocity of the third fragment? ये है, इसका velocity मुझे निकालना है। इन दो का परपेंडिकुलर जा रहे हैं with the same speed, let me suppose, और इसका मुझे स्पीड निकालना है in terms of v and v. So again, let me repeat the question. There is a body anywhere, but here I take it as origin, and there is an explosion from inside. It becomes fragments. 2 fragments go perpendicular to each other. One in this direction, other in this direction. Third, I don't know. I have to find the velocity of the third. But these 2 fragments of equal mass, this and this, they are moving with the same speed, v and v. I have to find the velocity of this. Okay. Again, momentum conservation. जब अंदर से एक्सप्लोजन होगा तो बाहर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो बताइए मुझे, एटलीस्ट यू टेल मी व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? 0, because it was at rest before the explosion. What is the final momentum? Yes, this and this. इसका मोमेंटम इस बॉडी का जमा इस बॉडी का, इन तीनों बॉडीज का मोमेंटम हमें ऐड करना पड़ेगा। सो इट इज mvi प्लस mvj प्लस इसका क्या 3m, मगर क्या, डू यू नो, इज इट x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन? यू डोंट नो, देयरफॉर लेट अस से v प्राइम, उसका लिखा v प्राइम मगर वेक्टर, इससे हो जाएगा। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हाट डज दैट से? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या करना पड़ेगा, जरा लिखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, शाबाश। So Pf is equal to Pi. What's Pf? mvi plus mvj plus 3mv prime final momentum is equal to initial momentum 0. ठीक, तो what is v? m and cancel because it is right on the right side, it is 0. Okay, now what is v prime? That's minus vi minus vj by 3. तो क्वाड्रेंट इज माइनस एंड माइनस को, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट है, इसी क्वाड्रेंट में जाएगा थर्ड ऑब्जेक्ट। ये दिखाता है माइनस i माइनस j, यहाँ x भी माइनस है, y भी माइनस है, इसलिए इसी क्वाड्रेंट में ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो व्हाट इज v प्राइम मैग्नीट्यूड? पहले v by 3 तो होगा ही ऐसे, फिर मैग्नीट्यूड किसका निकालना है? रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं v प्राइम इज इक्वल टू 1/3, ऐसे लिखो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, वो होगा v स्क्वायर बाहर तो v/3, तो ये हो √2। आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। A body here explodes, 2 fragments go in the 2 respective directions perpendicular to each other with v and v. Third fragment, we have to find the velocity of the third fragment just by the momentum conservation. This is not the elastic collision. It's an inelastic collision. There was no kinetic energy initially, but there's now a lot of kinetic energy. Here kinetic energy has increased. So it isn't a collision, it is an explosion where kinetic energy has been generated. And that kinetic energy comes out of the potential energy which is stored inside the body because of the explosion. Thank you. You can download rest of the questions from my app, Tantray physics classes. That is my application that you can download from Google Store. And you have to practice with those questions, and I'll be supporting you all through the lectures. Thank you.